So welcome to the class फ्रिक्शन we had started। आज उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन, जो फैक्टर्स फ्रिक्शन इफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। ओके, जैसे कि रफ सरफेस है। ओके, सो अगर इफ देयर इज रफ सरफेस दैट मीन्स देयर विल बी मोर फ्रिक्शन, there will be more friction, okay, between the surface. Clear? If there is smooth surface, then there is less friction between the surface. Okay, so to increase friction, जैसे कि on icy sidewalks से ice हो गया है, in the sidewalks and roads we put sand, okay, to increase friction, because friction is a necessary evil. Friction is needed. If there is no friction, we cannot walk. Okay, so increasing the area of surface that are touching also increases the friction between them. ठीक है, टू सरफेस, जो सरफेस में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, दैट इज वी नो दैट फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द टू सरफेस. So if increase these two area, between those area friction is acting, there is the increase of friction. Okay, so जैसे कि we cannot slide as across ice with shoes. Okay, and we have on the thin blades of skate use, that is if we are the skate, that means the area is increasing. So as area is increasing, we are able to walk or move. Clear? Okay, then comes to next. The greater surface area of the soles of the shoes cause more friction and slow you down. Heavier object also have more friction, क्योंकि फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला में उसमें वेट का एक बहुत बड़ा रोल है. Okay, in next class we will know that there is in friction, there is the role of the mass. Clear? That means if object is heavier, then friction is more, क्योंकि it's more heavier object, it will what? It will press with more force, great force it will apply. Okay, so this causes great friction between them. Okay, then next कौन होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. हीट प्रोडक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट प्रोडक्शन होता है. सिंपल एग्जांपल, हम टू रब टू हैंड, आफ्टर सम टाइम you will feel heat temperature. That means friction produces heat. When we rub hands together, we feel warmer. That means friction produces heat. Okay, why friction produces heat? Friction causes the molecules on rubbing surface to move faster, so they have more energy. Okay, so it have high temperature and feel warmer. Okay, then heat from this friction can be useful. It not only warms our hands also, yes or no, also it also help in getting light from the matchstick. When at the time of burning matchstick, it also help us. It is a problem. But on the other hand, when friction between the moving parts of a engine में friction जो हो रहा है, at that time it is a big problem and it can cause the car to overheat. Okay, and friction reduced between the moving parts inside a कार इंजन में फ्रिक्शन लेस कैसे करेंगे? नहीं तो अगर इफ वी नॉट रिड्यूस फ्रिक्शन अगर रिड्यूस नहीं करेंगे, देन इफ यू विल नॉट रिड्यूस फ्रिक्शन, देन इट विल ओवरहीट, इट्स इफिशियंसी विल बी डिक्रीज. देन व्हाट वी शुड डू टू डिक्रीज इट्स फ्रिक्शन? So to reduce this friction, oil is used in the engine. So oil क्या करता है? Oil coats the surface of the moving parts. Moving parts के ऊपर एक surface बना लगता है and it makes slippery. Yes or no?
so they slide over each other easily. So when they slide over each other easily, then there is less friction produced. Okay, so in this way we reduce the friction. It is a way. Okay, and friction is always parallel to the surface in contact. फ्रिक्शन हीटर है जो सरफेस कांटेक्ट में है में पैरेलल होता है, फ्रिक्शन पैरेलल होता है. ओके, देन इन केसेस, सम केसेस फ्रिक्शन डिजायरेबल है, अदर केसेस में इट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंजन. ओके, विदाउट फ्रिक्शन वी आर नॉट एबल टू वर्क. अगर फ्रिक्शन नहीं है हम मूव नहीं कर सकते हैं, व्हीकल नहीं चला सकते हैं. ओके, if there is no grip on the road surfacing and vehicle, we cannot move forward because friction चाहिए मूव होने के लिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं है then we cannot move. In which case it is undesirable? In most of the cases, that is friction causes mechanical parts to seize, wear out. So in this case friction is undesirable. फ्रिक्शन undesirable, वो हमारे जरूरत नहीं. ओके, एक एक्टिविटी लेके देखते हैं. फोन विद फ्रिक्शन. 2 पीसेस ऑफ पेपर लेंगे. ठीक है, 1 पीसेस ऑफ पेपर इनटू बॉल के ऊपर में कवर कर देंगे, अदर पीसेस ऑफ पेपर नॉर्मल. ठीक है, देन क्या करेंगे, होल्ड द पीसेस ऑफ पेपर ओवर आवर हेड एंड ड्रॉप द पीसेस एट द सेम टाइम. The weighted piece will fall to the ground immediately. The flat piece of paper will flutter down more slowly because it is more surface area to create friction or drag on the air as it drops. समझ नहीं है. So ऐसे एक प्लेन पेपर और एक पेपर में हम कवर कर लिए, cover the ball and we fall it at the same height. Okay, fall at the same height. So due to here we see the resistance of the air. Due to resistance of the air, the plane surface of the paper, plain paper, it will move late. The surface, the paper which is under over the ball, it falls quickly. Okay, that means it proves the friction among the air, how friction creates among the एयर में किसी फ्रिक्शन होता है, ये कर सकते हैं. ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ एयर. ओके, देन टाइप्स फ्रिक्शन क्या कैसे कैसे हो सकता है. वी नो कि फ्रिक्शन दैट इज ए फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन एनी सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट. जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट होगा व्हेन इट स्टार्ट टू मूव. ओके, there are 4 types of friction: static friction, sliding friction, rolling friction, fluid friction. ये सभी फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब एयर और विस्कोसी फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक, रोलिंग फ्रिक्शन occur between solid surface. but fluid friction, it is occur in the fluid. fluid means क्या है, liquid and gas. fluid friction liquid and gas में होता है, liquid में gas में होता है. clear? Then we will start स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट्स. स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट इन द ऑब्जेक्ट्स में. ओके, व्हेन दे आर रेस्टिंग मतलब मूव नहीं हो रहा है, उस टाइम में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है. व्हेन द सरफेस स्टार्ट्स टू मूव देन देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन इज देयर. समझ में आ रहा है कि? So static friction when rest on a surface. If you are hiking in the woods, there is static friction between the chosen trail each time. Okay, so that is the static friction. It's a static friction with chosen trail. So without this static friction, we feel to slip out. That you making difficult to walk. We cannot walk. Exactly what happens if you try to work on ice. और जो surface में oil है या water है, we try to walk over it, then we fall down because there is the less friction. There is we cannot able to walk. So
friction, static friction is necessary for it. That is the part of the static friction. Okay, so next class we will continue. Those who not subscribe the channel, share with your friends. If any doubt in the section, then comes to our comment section, comment, and we will solve your doubt. Thank you.